नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज राहुल अंकल जी की बुक गुरुजी रिलेटेड बुक है, उसका सेशन इनिशिएट करेंगे। ओवर टू योर रोजी रोजी संधू आंटी। Jai Guruji. Sangatji, welcome to the book reading and experience sharing session 6 of the Divine Book, Guruji, Life and Divinity, written by Chabalinder Rao Uncle. Today's session will be conducted by Achal Paul Uncle, who is an old Sangat of Guruji. Achal Paul Uncle came into Guruji's Sharan in late 1990s when Guruji was in Empire Estate. On the personal front, Achal Paul Uncle is a communication specialist with over 40 years of experience in the industry. He runs a PR agency called Buzz Communication, which is being rated as one of the top 10 top 10 PR agencies in the country. Also, Achal Uncle is a trustee of an NGO called Vision India Foundation. And over to you, Achal Uncle, for taking us through the session today. Thank you. Thank you. Thank you, Rosie Uncle, Auntie, for this introduction. And today, as my job has been well defined, to introduce the main presenter, interventionist, speaker, as well as the author. So I would go step by step. First, profile of Gopal Sethi Uncle. Gopal Sethi Uncle, an ardent follower of Guruji, came into his Sharan in this life in 2000. And he is a erudite satsang conductor. I would say on various platforms you would have noticed that he's available and shares his experience, his satsangs, his pearls of wisdom during his period with Guruji Maharaj. And on a personal front, he is a textile sector expert. It might be finance, but I have heard his satsang. He got into the management fold as well. And today, he is also a motivational speaker and professional skill development expert for managers. That is what I have to talk about Gopal Sethi Uncle. And now, coming on to Archana Srivastava, Auntie. Now, first of all, I would like to bring to the notice of all the Sangat who's present here that the place from where she is at present residing, the time is midnight, early morning, 1 o'clock. Correct me if I'm wrong. And she, being an ardent follower of Guruji, started during the Empire State days. She is a postgraduate in clinical psychology from University of Allahabad and has been practicing in India, both in India and US, for more than 2 decades. Though a US citizen now, with a smiley which she has said, she has been she's proud of the fact that she belongs to a city called Prayagraj, the confluence of 3 sacred rivers city. Last but not the least, the man because of whom we all are here together, the author, nobody else but the author. While in earlier sessions, Rahul Uncle, Dr. Shabindra Rao, whom Guruji used to call Rahul, his profile has been shared earlier, but still, for the benefit of those who have joined in today and who are
new to this particular platform. Just a quick rundown on his brief profile. Dr. Raul, superannuated as Secretary to Government of India, is presently member of Central Administrative Tribunal in the Principal Bench at Delhi. He is an officer of the Indian Administrative Service of 1985 batch belonging to the Punjab cadre. He has served both with the state government of Punjab as well as the central government. Dr. Raul has written 3 books and published several articles in reputed journals. With this, may I now request the session may kindly be started. And first, who would like to come? Gopal uncle, would you start, or Archana aunty, how would you like to take it forward? Jai Guruji uncle. Yeah. Gopal uncle Sethi will be initiating the session of reading. Over to you, Gopal uncle. जय गुरु जी। आई होप मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही है ठीक से। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा। एक शब्द मुझे याद आ रहा था गुरबाणी का कि अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरे मन भावे। और आज के इस सेशन में जो सबसे पहला शब्द भी चला वो था अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे। तो गुरु के बारे में कुछ सुनना, कुछ कहना, कुछ पढ़ना, कुछ जानना, ये गुरु की कृपा और गुरु की रजा के बिना संभव नहीं है। तो सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने आज ये अवसर मुझे प्रदान किया है कि मैं राहुल अंकल ने उनके बारे में जो कुछ भी कहा लिखा है उनकी एक पुस्तक में गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म, उसका कुछ पाठ मैं आज पढ़ सकूं। और जैसे मैंने कहा गुरु के बारे में कुछ भी पढ़ पाना, कुछ भी जान पाना, ये उन्हीं की रजा के बिना संभव नहीं है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना ये अवसर प्रदान करने के लिए। और साथ ही शुक्राना राहुल अंकल का, सुरेश वासन एंड टीम का, अचल पॉल अंकल का। थैंक यू सो मच अचल पॉल अंकल फॉर my introduction and the love you always shower on all of us. And I welcome Archana aunty to this session, जो मेरे इस पढ़ने के बाद वो इंटरवीन करेंगी। और हम तो संगत जी, इससे पहले कि मैं पाठ आरंभ करूं, बहुत ही संक्षेप में ऑथर के बारे में और इस पुस्तक के बारे में। राहुल नाम तो सुना होगा, हम इसी नाम से उनको सुनते, जानते, पहचानते आए। वो तो गुरुजी की महासमाधि के बाद हमको किसी कार्य के लिए एक साथ इकट्ठा होना था, तो तब जाके उनके इस वास्तविक नाम शाबिलेंद्र राहुल या सी राहुल या राहुल अंकल, इस नाम से हम उनको जानने लगे। तो दैट शोज के गुरुजी के यहाँ जो डिसिप्लिन था गुरुजी की संगत में बैठने का, उठने का, हम एक दूसरे को पहचानते तो थे मगर जानते नहीं थे। पहचान ये थी कि ये भी गुरु की संगत है, मैं भी गुरु की संगत हूँ। एक दूसरे से स्माइल एक्सचेंज करना, प्रणाम करना एक दूसरे को, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। ये सब गुरुजी की आज्ञा भी थी और ये गुरुजी की ऐसी रजा। अब जो अंकल ने ये पुस्तक लिखी गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म, और इसका आज दूसरा भाग शुरू हो रहा है। मैं शुरू करूंगा उसका पाठन, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, यानी कि
डिवाइन के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में चर्चा करना। राहुल अंकल ने जो पुस्तक लिखी है तो प्रोज में, बट इट्स पोइटिक, क्योंकि गुरु के स्वरूप का इतना प्यार भरा डिस्क्रिप्शन, इतना रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन शायद ही हमें कहीं और जानने को मिले। तो और अधिक समय ना लेते हुए मैं एकदम से आरंभ करता हूं पाठन आज का। पार्ट 2, मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिविनिटी। तो गुरुजी से आज्ञा लेके सारी टीम, मल्टीलिंगुअल की सारी टीम, राहुल अंकल और सबसे आज्ञा लेते हुए मैं पाठन आरंभ करता हूं। पार्ट 2, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, द डिसर्नेबल डिसाइपल एस्क्राइब, यानी कि गुरुजी की संगत ही कह सकते हैं इसको, संक्षेप में अगर कहें, द डिसर्नेबल डिसाइपल एस्क्राइब, यानी कि एट्रीब्यूट और इम्प्यूट गुरुजी एज डिविनिटी इनकारनेट। अब जैसा अभी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि सन 2000 में गुरुजी के पहले दर्शन मुझे प्राप्त हुए। जिन्होंने भी हमें ये द्वार दिखाया, जिन्होंने भी जो भी हमें इस द्वार तक लेके गए, उन्होंने केवल और केवल इतना ही परिचय दिया था कि हमारे गुरुजी हैं जो सबका कल्याण करते हैं, उनके दरबार में जाकर के सब कुछ ठीक हो जाता है। तब तक गुरुजी का कोई स्वरूप देखने को नहीं मिला था, तब तक गुरुजी के बारे में और कोई भी जानकारी नहीं हुई थी। तो मैं अपना अनुभव, सबसे पहला अनुभव, which will be relevant to contribute here when I read this first sentence, कि जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के दरबार में स्टेप अप करके अंदर जाते हैं और जैसे ही वो पिलर के बाद से मुड़ के गुरुजी के आसन की तरफ देखते हैं, तो मुझे अच्छे से याद है, हालांकि गुरुजी की बारे में जो हमारे मन में धारणाएं चलती हैं वो कुछ अलग ही होती हैं, कि गुरुजी कोई प्रवचन करता होंगे, कोई भस्म पुड़िया पकड़ा देंगे या इस तरह की। लेकिन मेरे आगे करीब 8-10 लोग थे जो माथा टेकने वाले, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जब ये निगाह गुरु के स्वरूप पर पड़ी तो फिर वो हटी नहीं जब तक कि उनको मेरा नंबर वो प्रणाम करने के लिए नहीं आया। तो ये पहला अनुभव था गुरुजी के अंदर जो डिविनिटी है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये पहला एहसास, पहला अनुभव ही अपने आप में बताता है हमको कि गुरुजी की ऑरा, गुरुजी का जो एक प्रकाश है, कहते हैं कि गुरु के बिना घोर अंधकार, वाणी में भी लिखा है। गुरु हमें ईश्वर से मिलाता है और ईश्वर से वो ही मिला सकता है जो ईश्वर को जानता हो, जो उस निरंकार को जानता हो। और हमारी खुशकिस्मती कि वो गुरु जी स्वयं निरंकार हैं। तो आगे के पाठन में, इट इज अप टू द स्पिरिचुअलिटी सरचार्ज डिवोटी टू एलिवेट हिम और एस्क्राइब हिज डिविनिटी टू दैट ऑफ गॉड इनकारनेट और पूर्ण गुरु or an enlightened master. As one spiritual research organization puts it, the devotees of a spiritually enlightened guru have different levels of spiritual attainment. Most of the devotees have an average of 20% level of spiritual attainment. When such devotees attain a spiritual level of 50% or more, or such a spiritual level has been inherited by birth due to good deeds or past karmas of their previous births, having been blessed by the grace of God, they can recognize a true guru. इस घोर कलयुग में हम सब लिप्त हैं विकारों में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये काल ही ऐसा चल रहा है कि हमारी बुद्धि में ईश्वर के अलावा बाकी सब कुछ दिखाई देता है। तो ये मेरा ये मानना है कि ये गुरु की कृपा ही है, जो जब वो कृपा करते हैं,
मुझे नहीं पता, मैं अपनी अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, मुझे नहीं पता कि पिछले कर्म में कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे, मुझे तो नहीं ध्यान में पड़ते। लेकिन यही ध्यान में आता है कि गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है, और गुरु ने कृपा की, कारण कुछ भी रहा हो, बुलाया अपनी शरण में, अपनी छत्र छाया में, और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो सबके साथ बांटा हुआ है। तो आज तो पुस्तक पढ़ने का, गुरु के बारे में और कुछ समझने का समय है। द मैग्नेटिक पुल ऑफ डिविनिटी। It is the grace of God that we had the blessings to have had the association, sansparsh, meaning contact, and darshan of Guruji in his enlightened form during our lifetime. The serenity, calmness, and peace of mind we experienced in Guruji's presence are reflective of his spirituality and divinity. Whether Guruji would be seated on his asan or elsewhere, there was the radiant engulfment of positive energy. आपने अनेक संगत से सुना होगा कि अक्सर गुरुजी अपने आसन पर फॉर्मली विद्यमान होने से पहले कई बार एक किचन के बाहर एक साइड बोर्ड पड़ा होता था, उसके ऊपर बैठ जाते थे और हम सबसे ऐसे इनफॉर्मली बात करते थे जैसे किसी का कोई बड़ा भाई, किसी का कोई पिता, किसी का कोई कजिन, किसी का कोई फ्रेंड, वो उनसे बात कर रहा हो। 1-to-1 कंसर्न उनका सभी के लिए। और इसीलिए हम ये नहीं कहते हमारे गुरु, इसीलिए हम कहते हैं मेरे गुरु जया और कोई ना। This energy would transport the Sangat to a different state characterized by happiness, bliss, peace, and calmness. That is the beauty of being in the spiritual zone of a Nitya Siddha. The ever perfect soul is born a Siddha, and all his activities or exertions after attaining perfection are for the sake of setting an example for humility. Such a Mahapurush is immersed in perfect bliss from within. It is like the waves of a large body of water, a lake or an ocean, ruffled and rolling on the surface, but the deep expanse of water underneath lies blessed. सही बात, बिल्कुल बड़ी खूबसूरती से बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके राहुल अंकल ने लिखा। जब हम उनकी प्रेजेंस में, फिजिकल प्रेजेंस में जाकर के अंपायर स्टेट में बैठते थे, कानों में शब्द सुनाई दे रहे हैं, सामने गुरुजी का डिवाइन स्वरूप है। हालांकि कई बार हमें टोका भी जाता था, क्योंकि होता क्या था कि वहां जाते ही जैसे ही आप बैठते थे, आप ध्यान में अपने आप चले जाते थे। गुरुजी की ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि वो सबको ध्यान समर्पित कर देती थी। हालांकि कई बार कुछ ज्ञानी लोग हमें टोकते भी थे कि अरे गुरुजी सामने बैठे हैं, उनके स्वरूप को देखो, आंखें बंद करने का क्या तात्पर्य। लेकिन वो जो अब कहा जाता है स्क्रिप्चर्स में कि दिव्यता प्रत्येक जीव में विद्यमान है, क्योंकि हम उस दिव्य परम पुरुष निरंकार का एक अंश हैं। लेकिन उस दिव्यता को जगाता वही है जो पूर्ण रूप से दिव्य हो। राहुल अंकल ने तो कहा कि शायद हमारे अंदर 20%, 25% और जो बहुत विरले हुए 50% तक पहुंच गए। तो वो एक हलचल मच जाती थी, जैसे समुद्र की लहरों में जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में उनको देखता है तो वो हलचल मचा देता है उन लहरों में। ऐसे ही गुरु का स्वरूप। आगे का पाठन। The discernible devotees blessed by his grace could find an aura around Guruji's crown. It is no wonder that we have occasionally witnessed the symbol Om on the left and right side of his cleanly shaved head. In the region between the ear and the area slightly above his forehead, it is not always manifested and not visible to all devotees.
Many a times while doing acupressure, I would, that is Raul uncle, I would be curiously looking at his head to find the Om. Guruji used to look at me and give his enigmatic smile. गुरुजी के मस्तक पर, उनकी आईब्राउज के नीचे क्या क्या कुछ नहीं दिखाई देता था। ये गुरुजी की कृपा ही थे कि वो हमें ऐसे दर्शन उपलब्ध कराते। जैसे राहुल अंकल ने कहा ओम, मुझे कभी कभी उनके मस्तक के दर्शन करते हुए ऐसा लगता था कि साईं बाबा पटका बांधे हुए विद्यमान हैं। कभी कभी उनकी आईज के नीचे त्रिशूल, कभी कभी उनके मस्तक पर शेषनाग, माथे पर यहाँ। तो जैसी गुरु की कृपा वैसे हमको दर्शन उपलब्ध होते थे। तो ये यहाँ जो राहुल अंकल ने कोट किया है पतंजलि के योग सूत्र से, द ब्लेजिंग रेडियंस और इनर एनर्जी इज द आउटकम ऑफ द मास्टरी ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ धारणा, ध्यान और समाधि बाय द एनलाइटेंड योगी और साधक। अष्टांग योग के ये 3 अंतिम भाग हैं, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि तो एक अल्टीमेट स्टेट हो गया। वो उसके लिए तो बहुत अभ्यस्त होना पड़ेगा और उसके लिए तो बहुत कुछ करना होगा। वो गुरु की कृपा से ही संभव होगा। धारणा, ध्यान और समाधि बाय द एनलाइटेंड योगी और साधक, self effulgent radiance shines forth by itself when the yogi masters the knowledge and awakening of the energy located in the Manipur chakra in the navel region। तो ये जैसे मैंने बताया कि राहुल अंकल ने कोट किया है पतंजलि की योग सूत्र से, विभूति पैड 341। फिर आगे का पाठन। Can we ascribe the inner energy being reflected in Guruji's presence to such an outcome of God's grace or the years of sadhana during the many births or his current life? Guruji only knows. The divine peace, calmness and serenity that epitomize Guruji would draw us to his place of stay like a magnet. Every day we would look forward to finishing the day's engagements and rush to his abode. We would not think of any other engagement except going to Guruji's place. Truly agree, Rahul uncle. We would be so excited, that during the initial days when we started going to Guruji's in 2000, the Sangat would be held all 7 days of the week. But then there were times when it was limited to 4 days a week, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. And sometime Guruji will bind some Sangat to come only once a week or twice a week or once a fortnight or even once a month. That would be a torture. It happened to me once. Guruji told me to come once a week. I was hassled, I was baffled. Why? But anyway, that's Guruji Raza. और वो गुरुजी की कृपा ही थी कि कुछ दिन बाद उन्होंने वो रिवोक कर दिया। तो एक जैसा राहुल अंकल ने बताया, और हम सब जब शाम होने लगती थी और हम बेताब हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे, क्योंकि वहां हर रोज कुछ नया दिखता था, कुछ नया सुनता था, कुछ नया अनुभव होता। The friends, the kith and kin, professional colleagues, clubs and socialization would assume least importance. The unavoidable social engagements would be attended after taking leave from Guruji. Once, while Guruji had gone for his midnight walk in the bylanes of the farmhouse of Sultanpur, Deepak Chopra, the private secretary to Mr. L.K. Advani, said, "It is beyond our intelligent capacity to understand Guruji. Rather, we are quite confused about who he is. Nevertheless, every day we are attracted to his presence like a huge magnet pulling us up to him." So true, so true. गुरुजी को
उतना ही हम समझ सकते हैं जितना वो हमें रिवील करें, जितना वो हमें बताएं, जितना वो हमें चाहते हैं कि जितना हम जान पाए। वो कहा करते थे, कई संगत के कुछ गुणीजन ये इच्छा अपेक्षा रखते थे गुरु जी से कि गुरु जी आप हमें दिव्य दर्शन दो। कहते थे तुम्हारी आंखें वो सहन नहीं कर पाएंगी उस स्वरूप को। ठीक बात है, हमारी अपनी अपनी अलग अलग एक स्टेज है इस आध्यात्मिक मार्ग पर। तो उसके हिसाब से ही गुरुजी हमें उतनी ही शिक्षा देते थे जितनी ये फिजिकल शरीर, ये मन हमारा जिसके ऊपर और अनेक आवरण चढ़े हुए हैं, जितना वो वहन कर सके, जितना वो सहन कर सके। अब एक सत्संग एक कोट किया है राहुल अंकल ने, एक मुंबई से आई हुई एक नई संगत, ऐसी संगत जिनको ना उससे पहले देखा गया ना उनके बाद में देखा गया। सो आई एम रीडिंग दैट। द मुंबईकर। One day, the Sangat Hall in the villa at Empire State was full to the beam. DJ Uncle, late Sardar Rajinder Singh Ji, who oversaw the sound system to play the Shabads, was fondly called by Guruji as DJ Uncle, was playing Shabads one after another. A gentleman who was not seen earlier in the Sangat was sitting in front of the washroom. Rahul Uncle was sitting next to him. He was in meditation throughout. Suddenly, he shouted at the top of his voice as if he was Archimedes discovering the principles of floating. Everybody in the Sangat got startled. However, Guruji was in his iconic serene and calm state. Sat Chit Anand manifested. Sitting quietly, the gentleman regained his composure and requested to say something. Guruji hinted DJ Uncle to stop the playing of Shabads, and the gentleman said, Sangatji, you are all blessed souls. Guruji is Sakshat Parabrahma. I could see him being surrounded by all the gods and demigods. I request you all to never ever leave such a Mahapurush. I had heard about him from a devotee. I came all the way from Mumbai to have his darshan. I got his divine darshan here amongst you. So many of the Sangats have had same or similar feelings. He was able to express, some would not express. So that's our Guruji. Guruji listened to his satsang quietly without reacting. Langar was served and the gentleman left the hall after having langar and taking Guruji's permission. He was never seen again in Empire State or Bade Mandir as far as my knowledge goes. So that was satsang of a Mumbaikar, narrated by Rahul. Now, fragrance from the 10 Dwars. Guruji's divinity always manifested in multifarious ways. It was universally experienced by most of the Sangat that Guruji's body exuded beautiful fragrances. The Sangat who had the grace to press his feet or do acupressure on his palm had the blessings of retaining Guruji's body fragrance in their palms and hands for a long time. A gush of fragrance would linger around each time Guruji would pass by someone, and this fragrance would stay for a considerable time. Guruji used to say, my body has 10 dwars, and you would find 10 different fragrances for each part. When Guruji would be in his mood, he would direct or allow a devotee to smell a part of his body to get the feel of the typical fragrance of that part of his body. There is another satsang, abundance of fragrances, which I'll read, and then I would briefly want to narrate what I experienced of these fragrances. Abundance of fragrances is the title of satsang shared by Rahul Uncle. The surge of the Sangat was enormous for the narrow lanes surrounding the house of General Ahuja in Panchkula. For better felicity,
For better facilitation of the Sangat, Guruji shifted from Panchkula to Sector 33, Chandigarh in the year 1997. Guruji allowed the institutionalized Sangat system only a couple of days in the week. There was a few of them who were allowed every day. Similarly, a few would be allowed during the off-Sangat hours. On one of those off-Sangat moments, we were called to Guruji's place. When we reached there, a civil servant couple was already present there. The four of us were comfortably sitting in the retiring rooms of Guruji. While doing seva, Guruji engaged us in small talks about matters of government and other aspects of daily life. After a moment, Guruji got up and asked the female civil servant, civil servant to smell a particular part of the body. She was surprised to get the fragrance of different kind than the usual fragrance of Guruji, a kind of a mix of a rose essence. Then Guruji asked me one by one to smell the same part of his body and savor the fragrance. That was not all. He directed us to smell various parts of his body. Each part was emitting a different fragrance. We had our hearts content in getting the essence of the distinctly different fragrances from several parts of Guruji's body. When any devotee far away from the physical presence of Guruji genuinely sought his divine guidance and blessings or connected with him by sincere reverence, the Purna Guru made his presence felt by sending, dispatching, radiating, remitting, or broadcasting a whiff of his body fragrance. This is an experience of many devotees and may be taken to the near universe, to be near universal. A typical fragrance, a kind of essence largely of rose, denoted his remote presence. It was not only a specific individual devotee for their exclusive internalization, but a group of family members or Sangat that would get a chance to experience the fragrance. It was not an imaginary phenomenon or hallucination. Rather, it was a real sensory experience mediated through the olfactory system. Olfactory system is our smelling system. Later on, Guruji would corroborate his presence by telling during subsequent darshans that he was there present at the moment to bless or grace the Sangat. Many a time, he would tell the Sangat, "Dekhya, Guruji nu yaad kita, te main tuhade kol haਜ਼ਰ hoya. See, you hailed Guruji, and I could not help but appear at your location. Or main bhi utthe ਹਾਜ਼ਰ si. I was also present there." It was common knowledge to the Sangat that Guruji would be present anywhere through his strong will, and that presence would be in the form of his beautiful divine fragrance. Now, on the subject of fragrance, I wish to share a few small anecdotes. It started right from the beginning of our visit to Empire State, the first day itself, 20th February. Excuse me. When we were taking off our shoes, there was a whiff of fragrance, very strong. Initially, I thought somebody must have done a room spray here because so many shoes are kept here. But as we progressed and as we learned about Guruji's fragrance, I could easily associate that fragrance to be the divine fragrance of Guruji. Some would say the rose fragrance, some would say some other fragrance, chandan or whatever. But it was unique. It was altogether unique, but you could figure out. Guruji would make you understand, this is me. Ye main hoon.
हम लोग संगत में आते थे. Usually me and my wife, children, my son and daughter were young, they were school going, college going, so they would come occasionally. But many a times when we would reach home after attending the satsang, they would have this whiff of fragrance reaching out to them. We could not feel that, but they would, which showed that Guruji was sending his blessings through, or Guruji was going there to bless them. I can, say so. कई बार ऐसा भी हुआ, गुरुजी जब बहुत मस्ती में, मौज में, मूड में होते थे, तो कहते थे आज अमृत वर्षा हो रही है. And we would go and see Guruji's Swarups, there in the placed on the walls of Empire State Compound. So वहां पर जब हम उसको, उनके स्वरूप को टच करते थे, तो as if it was sweating and sweating profusely. And the moment you bring your fingers to near to your nose, you could feel that fragrance, you could smell that fragrance. So Guruji purposely ये सब किया करते थे so that हमको engage रखने के लिए. गुरुजी कहते थे चमत्कार को नमस्कार, और वो हमें ऐसे चमत्कार कई और रूपों में भी दिखाते रहते थे so that हम भटके ना, हमारा ध्यान ईश्वर के प्रति जो वो ले जाना चाहते हैं वहीं तक रहे, वहीं पहुंचे. एक बार ऐसे हुआ संगत जी, I was working, तो मैंने एक, there was a big bag my boss had given to me, which carried some important documents and also some money, so which I had kept somewhere in the office, and I forgot. When my accountant was drawing up all the accounts, he showed that this much balance should be with me. So I was baffled. Where's that money gone? Where are those documents gone? I searched all nook and corners of the office, but couldn't find them. So I would go to Empire State संगत में बैठ के वहां मनी मन गुरुजी से अरदास यही करनी, गुरुजी वो नहीं लभ रहा, की करा. Account for, or did not make note of it, something like that going on. Few days gone by, and one fine day, looking for something else, I found that bag. And the moment I opened, a strong whiff of fragrance came out of that. Guruji said that, don't worry, I was protecting everything here. So after lot of requests, because he also wanted us to take care of our belongings carefully. ये कुछ ऐसे सत्संग मुझे लगा would be appropriate to share with the satsang संगत. और एक बार गुरुजी हमें लेके गए किसी संगत के घर पर, कुतुब मीनार, वहां पर रूफ टॉप पे बहुत ही सुंदर माहौल था, वहां गुरुजी विद्यमान थे. तो उस दिन गुरुजी की कृपा हुई, I was pressing his feet, और फिर ना जाने क्या हुआ, अचानक से उठ के मैं उनका माथा सिर दबाना शुरू किया, और थोड़ी देर में दबाता था और ऐसे करके आता था, थोड़ी देर दबाता था ऐसे करके. गुरुजी कहते और खुशबू लेनी है. He made me smell his underarms, he made me smell his navel area, he made me smell his underlegs, and it was profusely smelling. तो जो राहुल अंकल ने इसमें लिखा कि वो उनके 10 द्वारों में से 10 अलग अलग किस्म की जो खुशबुएं, जो फ्रेग्रेंसेस आती हैं, वो एक उनका दिव्य चमत्कार ही है जो हमारे लिए, क्योंकि हमारा जीवन उन खुशियों से, उन खुशबुओं से भर जाए, इसी के लिए शायद वो हमें सब ये चमत्कार करके दिखाते हैं. आगे का पाठ. Guruji's body fragrance would have a lingering impact on his clothes and other accessories, shoes, socks, jutis, etc. that he wore. He used to give away all his clothes, chola, t-shirts, kurta pajama, shirts, jutis, sneakers, among other items, to the blessed Sangha.
His fragrance would be felt on those clothes for years. Whenever he materialized Sachkhand Prasad, it would emanate a beautiful fragrance. If the blessed devotee is allowed to keep the prasad at home, the fragrance would be intact till it dematerializes, degenerates, or gets used up. Guru Nanak has described 5 realms of domains in Japji Sahib, a section of the Guru Granth Sahib. The 5 realms are Dharmkhand, the realm of righteousness; Gyankhand, the realm of right knowledge; Saramkhand, the realm of spiritual endeavor; Karamkhand, the realm of grace; and Sachkhand, the realm of truth. Sachkhand is the final stage in the 5 realms, which is the realm of God, the Nirankar. ये पौड़ी 37वीं श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, जो राहुल अंकल ने बताया यहाँ। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल। तो निरंकार तो सचखंड में ही रहता है और हमको वो निहाल करता रहता है। In the realm of truth, the formless Lord abides. Having created the creation, he watches over it. By his glance of grace, he bestows happiness. लख खुशियां पातशाहियां ये सतगुरु नजर करे। सचखंड के प्रसाद की बात करें तो 3 ऐसे सुंदर मौके हमें भी देखने को मिले। एक बार जब उन्होंने अरुण शौरी अंकल को दिव्य प्रसाद दिया, वो बर्फी, खोया, मावा, कुछ ऐसा जैसे मिल्क केक होता है उस टाइप का था। वो अचानक वो हतप्रभ रह गए अरुण शौरी, जब गुरुजी ने उनसे कहा कि हथ कर, और उनके हाथ में वो डिवाइन प्रसाद। और जैसा राहुल अंकल ने भी लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे, कि वो छोटा सा दिखता था, लेकिन जैसे ही हाथ में आता था वो फैलता जाता था। तो बहुत सा प्रसाद छोटे छोटे टुकड़ों में, कणों में गिर गया, और उस प्रसाद का एक कण भी हमारे अंदर तक जाकर के सुकून और एक ऐसी अनुभूति देता था जिसका व्याख्यान करना, जिसका बखान करना बहुत कठिन। वो बयां भी नहीं किया जा सकता था कि वो प्रसाद क्या है। इतना मीठा, इतना सुगंधित, इतना डिविनिटी से भरा हुआ कि वो हमारे अंदर को झकझोरता था एक तरह से, इतना सा कण भी। और वही हुआ जब अरुण शौरी अंकल को दिया और जो प्रसाद थोड़ा सा गिर गया वो हमें, और फिर गुरुजी ने उसमें से थोड़ा करके जो संगत वहां विद्यमान थी उनको दिया। एक बार इंद्र शर्मा जी, जो सिलेक्ट सिटी वॉक वाले हैं, अब तो नहीं है, उनको भी वो प्रसाद मिला। संगत काफी चली गई थी, बाद में बैठे हुए थे हम सब, और दूर से वो पीछे बैठे हुए थे, तो जोर से आवाज दी गुरुजी ने, शर्मा जी आगे आओ। शर्मा जी जैसे ही आगे गए, उनको भी वैसे ही, वो भी हतप्रभ से, ऐसे ही एक और संगत को, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो 3 बार ऐसे क्षण हमारे जीवन में आए, और गुरु जी का दिव्य प्रसाद पा करके हम भी, मैं भी, और मेरा परिवार भी, मेरी आंटी, हम सब धन्य हुए। The followers of Guruji have variously described a special kind of prasad produced out of nothing and distributed to the devotees present as a Sachkhand prasad. It may be noted that Guruji might have materialized many things for his devotees as part of his supernatural powers or siddhis, but all such materializations are not deemed to be a Sachkhand prasad. These are simply called Guruji's prasad. Guruji would call one of the blessed devotees and ask them to open their palm. Guruji would open his palm that contained a small ball of a crystal like murabba. It is generally made of suji, mishri, and the like. The small ball of prasad would grow to completely cover the palm of Guruji within no time. The joint palms of the devotee would barely suffice to contain the entirety of the prasad. Such a prasad is full of a special kind of fragrance that lasts for eons. Guruji used to distribute a small piece of such a prasad to each of the Sangat present there, as I was also narrating in the course of my satsang.
There are numerous instances narrated by individual devotees how they could actually experience Guruji's presence in the form of his typical fragrance at locations far away, even in foreign countries, away from Guruji. And such a presence was not only because of the prayers of the devotees, it was Guruji's own volition, his Leela, his Mauj, his love and affection for the devotee. As to where and when he would make his presence felt to individuals or a group of devotees, the unique ability of a Purun Guru of being physically present simultaneously at more than one location is described as Mana Java, Manojvitva, by the ancient sages, even after Guruji had left his physical body on 30th May 2007. Several devotees still experience his divine presence in the form of his fragrance, confirming Guruji's cosmic presence. आज भी हम कई ऐसी संगत से जो उस समय नहीं जुड़ पाए थे जब गुरुजी अपने इस मानव स्वरूप में विद्यमान थे, वो भी इतने गर्व से, इतने प्यार से, इतने चाव से हम सबको नरेट करते हैं कैसे गुरुजी की खुशबू उन तक पहुंचती है। और वो सच में अधिकारी हैं उसके, क्योंकि हम तो, जैसा मैंने बताया कि हम तो ये सोच के गए थे कि किसी गुरु के पास जा रहे हैं और किसी एक स्पेशल आकांक्षा को लेकर, एक डिमांड लेकर के गए थे, एक इच्छा लेकर के गए। लेकिन आज जो भी संगत जुड़ रही है, भले ही उनके मन में कोई इच्छा हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने गुरुजी के इतने सत्संग सुने हैं, गुरुजी के डिविनिटी के बारे में इतना जान चुके हैं कि वो सीधे सीधे गुरुजी अपने आप को महापुरुष कहते थे। लेकिन ये तो बाद में अनुभूति हुई कि वो महापुरुष हैं या महादेव हैं। अगर हमारी आस्था की बात करें तो वो हमारे लिए तो वो महादेव। अब राहुल अंकल ने यहाँ भावेश का किसी पुस्तक में वो नाम गलत स्पेल किया हुआ है, जो इनिशियल प्रिंट था भूपेश, बट ये नाम है भावेश पांडे। भावेश इज रियलाइजेशन ऑफ डिविनिटी। Bhavesh Pandey, Colonel Joshi's nephew, was initially cynical about the supernatural powers of Guruji. He was a regular at Empire State and was enjoying the serene atmosphere in the company of devotees with a positive vibe. The soothing shabads and the cocktails of prasads, though he enjoyed the satsang rendered by the devotees, describing the blessings and supernatural abilities of Guruji, he was skeptical about them, rationalizing these as coincidences and happenstances. बहुत से लोगों में यही भावना रहती है, और ये कहें कि गलती उनकी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, गुरु अपने आप को उतना ही रिवील करता है जितना वो करना चाहता है, जितनी हमारी एबिलिटी टू ग्रैस्प है, जितना हम गुरु को समझ पाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, गुरु आगे और अपना ज्ञान, अपना और प्यार बांटता है। One day he was returning home from his office in Manesa. It was late in the evening and the Delhi-Jaipur highway was full of long-haul goods trucks from far-off places like Mumbai, Surat, Nashik and Pune. Suddenly a street dog darted out of nowhere and collided with his bike. Despite the impact, he did not lose balance and managed to steer ahead. Had he tripped, it could have been fatal, as heavy trucks were speeding on both sides. At that moment, he felt a draught of Guruji's fragrance and could feel it for a couple of minutes. He could sense Guruji's presence in the hour of reckoning. Was it Guruji who steered him to safety? Bhavesh was sure it was Guruji, and since then, his cynicism about the supernatural powers of Guruji dissipated, and Bhavesh had no doubt about the divinity of Guruji. So that was Satsang of Bhavesh, narrated by Rahul Uncle in his book. Now, the last para of today's reading. He is there and he is not there. ऐसी अनुभूति, ऐसी भावना हमारे सबके मन में चलती रहती है।
जब गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस में वो विद्यमान होते थे, तो कभी कभी वो आपको इतना, एक तरह से कहें देसी भाषा में, इतना भाव देते थे, आगे वहीं उनके पास ही बैठ जाना, गुरुजी आपसे बात करना, गुरुजी कुछ कुछ कह देना, कुछ कुछ पूछ लेना, और भी ना जाने क्या क्या, टू मेक यू फील इलेटेड. And then for a long period, there would be no contact. No contact means no eye contact, no conversation, nothing. तो लगता था गुरुजी ये क्या हो रहा है, आप नाराज हैं क्या, आप रुष्ट हैं क्या, मुझसे कोई गलती हो गई, या कोई लोग ऐसे भी सोचते थे, अच्छा ठीक है, नहीं तो नहीं सही, कोई बात नहीं. So he is there, he is not there, and this Rahul uncle is talking about his divine presence. Most of the time when Guruji would not be not engaged in conversation with any Sangat, and the hall would be riveting with the Shabads of Gurbani, with the Sangat engaged in their own way of contemplation or wavering thoughts, depending on the levels of spiritual maturity, devotion, and sincerity. It would be observed that Guruji would be in a different world. It was like he was there, his physical body was there, and also not there mentally, he would be engrossed elsewhere. अनेक बार देखा गया गुरुजी एकदम स्टिल, उनकी नजरें कहाँ हैं, किसको देख रही हैं, किसको ब्लेस कर रही हैं, कुछ नहीं है. जब ऐसी अवस्था में जब हम उनके चरण स्पर्श करते थे, तो ऐसा लगता था अ पीस ऑफ मार्बल, बिल्कुल एकदम स्थिर. उनको कोई वो ना संगत अलग अलग प्रकार से अपना प्रेम उन पर व्यक्त करती थी. कोई जाकर के एकदम से धड़ाम से गिर जाते थे उनके चरणों, कोई जाके बड़े सॉफ्टली टच करते. लेकिन जब वो ऐसी अवस्था में होते थे, तो एकदम मार्बल स्टोन की तरह अचल, बिल्कुल उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसे उनके पैरों को दबा रहा है, कौन कैसे उनके पैरों को छू. So that Guruji would be in a different world. It was like that he was there, his physical body, and also not there mentally. He would be engrossed elsewhere, as if he was in constant communion with some higher authority, the Supreme Being, while his presence would be radiating the divine light in its entire splendor. The atmosphere would be radiating with high octane energy filled with love and divine benevolence. The Sangat used to relish this spark of divinity and its resonance. Guruji has been the manifestation of the divine light to the world in this exciting time. He raised the spiritual level of humanity under a new paradigm of living. So this was my share of today's reading. From here onward, next Saturday, another Sangat will be assigned for reading. I would just like briefly to add one or two things. As I said in the beginning as well, that although this Granth is a prose, ये निबंध के रूप में लिखा है, लेकिन ये एक कविता के समान है. ऐसी कविता जो ऐसे ऐसे शब्द चुने हैं राहुल अंकल ने. जब मैं इसको पढ़ रहा था, आज भी या पहले भी जब भी पढ़ा है, तो सीधे सीधे वो चित्रण मेरी आंखों के सामने वो अंकित हो जाता था कि गुरुजी विद्यमान हैं, हम उनके पैर छू रहे हैं, उनके उस शरीर से वो खुशबू आ रही है, वो ऐसे करके किसी को बुला रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं. तो सब कुछ एक चित्रण जैसा हमारे आंखों के समक्ष आता था. गुरुजी के बारे में बहुत से ग्रंथ हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भावना है. नथिंग टू से कि भाई कोई ऐसा है या वैसा है, बट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रंथ, सीधा दिल से और
सबसे बड़ी बात तो यह कि गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी ने कहा कि तू ये करेगा, तू ये लिखेगा, और वो आज्ञा फ्रक्टिफाई हुई। कब हुई ये तो हम बेचैन हो जाते हैं कभी कभी कि ये कैसे, लेकिन जब उचित समय होता है गुरुजी तभी वो कार्य करवाते हैं। ऐसा हम गुरबाणी में भी पढ़ते सुनते हैं, शिव पुराण में भी पढ़ते सुनते हैं। गुरुजी अब अगर एक उदाहरण मैं आपके समक्ष कहूं कि कार्तिकेय का जन्म हुआ तारक का वध करने के लिए, लेकिन तारक के पुत्रों का वध करने के लिए शिव जी ने स्वयं अस्त्र उठाए। वो चाहते तो कार्तिकेय को ही भेज, लेकिन ये बात यहाँ, ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे हर एक के लिए एक डिफरेंट टास्क असाइंड है डिविनिटी द्वारा। तो हमको वो बेताब नहीं होना है किसी दूसरे को देख करके, वो फलाना ऐसा कर रहा है, वो उसने इस समय में किया है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं गुरुजी का कि उन्होंने राहुल अंकल को ये आज्ञा दी और ये ज्ञान दिया कि वो उनके स्वरूप का एक सुंदर चित्रण कर सके। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूं। पाठन करने में मुझे बहुत आनंद आया। आई एम श्योर आपको भी वो अनुभव हुआ होगा, वो आनंद। इस पाठन करने के दौरान जो भी त्रुटियां मुझसे हुई हों उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं मल्टीलिंगुअल टीम को या अचल अंकल को जो भी आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे, अर्चना आंटी वेट कर रही हैं, जैसा अचल पॉल अंकल ने बताया। इट्स पास्ट मिडनाइट आई थिंक दैट, सो ओवर टू यू अचल अंकल। Yes, thank you very much. As always, आपने इतना अच्छा आपने रीडिंग करी और उसको एक्सप्लेन किया with your anecdotes which are called satsangs, meaningful satsangs, very relevant. And now, without any further delay, I would like to invite Archana Aunty. You have been waiting, tremendous patience, and हाथ जोड़ के नमन. Please, now you take on the charge for the session, a balanced time period of the session. Yes, please. Archana Aunty, over to you. Sure, Uncle. Jai Guruji, please let me know if I'm audible enough and everyone can hear me fine. Yes, yes. Perfect. So His Holiness Guruji Maharaj के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, and सारी प्यारी संगत जी नमस्कार, जय गुरुजी. And definitely Uncle, it's past midnight here. It's like 1:45 a.m. Which is like अभी तो midnight से भी ज़्यादा ये अमृत वेला का ही टाइम हो गया है. तो this late night soiree with Guruji Maharaj, this reminds me of those days. Everyone remembers, आप जितने भी हैं आप सबको भी, all the esteemed Sangat members and all the respected Sevadars here, everyone, Rahul uncle, Vasan uncle, Gopal uncle, Achal Paul uncle, and everyone who, whoever is here in this beautiful and divine session of this book, which is very, very divine, this book reading. So you all remember those days, especially जब बड़े functions होते थे, and especially महाशिवरात्रि is very close to our hearts because our Guruji's Mahadev. तो जब हम बड़े मंदिर से लौट रहे होते थे towards Gurgaon, and I'm talking about way back in 2004 onwards. So उस time पे भी it used to be so quiet and calm all the way because it used to be very late, rather the early wee hours of the morning. So 3 बजे 2 बजे ऐसे. So जब हम वहाँ से अपने घर DLF जाते थे phase 4 and later phase 5, so रास्ते भर भी it used to be so meditative. वो एक शांति जो है ना, so वो that definitely it reminded me of that
those days. So yeah, back to the very beautiful book reading session. First of all, congratulations to Raul uncle for compiling, writing, and I'm sure without the divine intervention, this was not possible for any human being. Because let me tell you, there is a small satsang around it. Not small, every satsang is Guruji's satsang. So 2 years ago, I guess I received a message from somebody I didn't know. Of course, because in that time, as you all remember, we never used to socialize much. We used to recognize each other just by faces, या कहीं अगर कभी market में मिल गए, oh आप भी गुरुजी के यहाँ आते हैं, that kind of interaction. That's all. So I got this message, which was kind of an invite for a book launch. And I said, I would love to, but I'm in US and I'm sorry, it's in Delhi. And uncle very graciously said, it's all right. You know, it was, I don't think it was meant for you, but it's okay. At least you see, koi baat nahi, Guruji's wish. I said, okay, yeah, sure. And, but since then, I was kind of very curious about this book. So I ordered from here, and it took more than a month for me to get my copy, the hard copy. Now, when I had this copy, this is so interesting that I could not put it down. But at the same time, I was trying to savor it. You know, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे ज़्यादा मजा आए, ज़्यादा देर तक, you know, prolonged. I could prolong this happiness. And now, when Suresh uncle approached me for this book reading, I said, yes, I will do that. And then he said about the time. I said, it's all right. You know, Guruji's wish, his timing, everything is planned by him. So let Guruji just take over everything, and I would definitely do this. And believe me, my house is full of teenagers. I have teenage kids, so the house is pretty much awake right now. So don't think everyone is sleeping and I'm alone. Everyone is around, so nothing to worry about. So now we can continue with the very beautiful chapters. Gopal uncle read very beautifully. And one by one, I would like to see, there is nothing much to add, to be honest, because this book is so perfect in itself. Like, there's no room for improvement, to be honest. But at the same time, since I have been assigned this interventionist job, I will definitely try to add my 2 cents and give whatever insight I have about it, about those beautiful pages. So yeah, let's start. I think we started with the first chapter, first page, which was very, you know, it's very, very touching and very honest also, because here uncle says that even when devotees attain a spiritual level of 50% or more, or such a spiritual level has been inherited by birth due to good deeds or karma of their previous birth. This line is so touching to, I'm sure, so many Sangats' heart, because as Sangat, we still don't know how we got this lucky that Guruji called us, that Guruji ne hame apna liya. How did we get this lucky? At least I can speak for myself. मुझे तो आज तक विश्वास नहीं होता कि मुझे सच में गुरुजी मिल गए, सच में इसी जन्म में. So that, you know, that euphoria is beyond any words. Nothing can explain, nothing can ever describe this feeling, that euphoria of being there, being in the same room, breathing the same air. गुरुजी महाराज ने बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है हम सबको. Even the Sangat who joined after Mahasamadhi. Also,
I would like to quote from my Bible, Autobiography of a Yogi, since I have been a Kriya Yogi since my high school days, thanks to my dad, who introduced me to Kriya Yoga and this, which I call Bible to me, Autobiography of a Yogi, Yogi Kathamrit. उसमें एक chapter में, if you all remember, there is a प्रकरण which says कि जब बाबा जी को एक somebody was looking frantically after him, Mahavadar Babaji, and when he found him, he, in verbatim I am quoting in Hindi, कि विकास की इस अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता. And he told him to jump off the cliff. And without a second thought, that wannabe disciple, as we all are, jumped off the cliff. And then, of course, he was restored and taken back to Mahavatar Babaji. That incident says everything about it. जो भी अवस्था हमारी है विकास की, whatever spiritual development, growth we have had, Guruji knows better. So Guruji ने हम सबको एक to a certain अवस्था, to a certain state लाने के बाद ही हमें accept किया है. And the work is not done yet. He's still working on us, still on our spiritual upliftment, our growth, our journey, because destination तो वही है, destination तो वो खुद ही है. But this journey also he made so beautiful for each one of us, trust me. Now the second line, the magnetic pull of divinity. Oh my God, of course, everyone remembers that. That वो जिसको कहते हैं ना दिल में हुक उठने लगना, वो शाम होते ही दिल में एक हुक उठती है कि बस गुरुजी के पास जाना है, और कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में. कोई आ गया तो लग रहा है कि ये जल्दी जाएं तो हम गुरुजी के पास जाएं. कोई किसी ने बुला लिया तो हम बोले कि नहीं नहीं हमें तो कहीं जाना है. तो this kind of unexplained and to worldly people it was very irrational too, because this was beyond anyone's understanding कि वो क्या है जो हमें ऐसे खींचता है, और ये हर किसी को बताने के लिए भी नहीं था. So many people, they were so curious. My neighbors, my कुछ relatives, and we were so young, and they used to say कि ये तुम लोग की उम्र है ऐसे जगह जाने की. लेकिन somehow nothing could deter us from going to Guruji, and rather it was Guruji's calling, which was so strong, as uncle rightly said, magnetic pull, कि उसके आगे फिर हमें कुछ दिखता ही नहीं था. वो सीधे जैसे आंख बंद करके सीधे घर से देदफ से गाड़ी में जो बैठते थे, फिर भाटिया आंटी जो हमें लेके गई थी गुरुजी के पास, उन्होंने कहा 10 किलोमीटर सीधे बिल्कुल बिना कुछ आगे पीछे देखे, जीपीएस तो होता नहीं था उस टाइम पे, तो पहुंच जाना अध्या काटाइनी से सीधे 10 किलोमीटर आगे नाक की सीध में, और वहां से लेफ्ट लेना. तो उस समय तो ऐसा नहीं था कि बहुत सारे सेवादार खड़े हों बाहर और आपको गाइड कर रहे हों, सीधे बस बड़े मंदिर पहुंच जाना. एंड ट्रस्ट में जब हम बड़े मंदिर भी जाते थे तो सेम डायरेक्शन फॉलो करते थे और पहुंच जाते थे अपने आप. और जब एम्पायर स्टेट जाते थे, इवन देन वो मैग्नेटिक पुल ऐसी होती थी कि हम बस जाके एम्पायर स्टेट के सामने हमारी गाड़ी पार्क होती, वहां से सीधे खींचे हुए अंदर चले जाते. एंड ऑफ कोर्स रेस्ट इज हिस्ट्री, एज वी ऑल नो. सो दिस ऑल्सो इज वेरी वेरी familiar and very close to my heart again. So these are the moments, very precious and very very golden days, I would say, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी लगा था कि these days are not gonna be there forever. So yeah, now एक लाइन अंकल ने यहाँ पे लिखी है जिसके लिए मैं भी कुछ थोड़ा ऐड करूंगी इसमें. Uncle says, it is no wonder that we have occasionally witnessed the symbol Om
on the left and right side of his cleanly shaved head. So my sansmaran for that is that, see, गुरुजी के सामने तो वही हाल था ना कि उनको देखना भी चाहते थे और उन पे नजरें भी नहीं टिकती थी। तो उनको देखते ही अपने आप नजरें झुक जाती थी। ये उनका जलवा था, ये उनका नूर था, ये उनका ऑरा था। तो बाहर जब एक याद होगा जो बकेट में पानी रखते थे और अक्सर अंकल जो है खड़े होके एक बड़ी सी हैंडल वाली वो लेके बर्तन उससे हाथ धुलाते थे और सबके हाथ पे थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाते थे, सब आगे बढ़ते जाते थे। Everything used to be so organized and so structured and so self-disciplined there. Like nobody was on your head telling things to do, but still everything was so coordinated. तो उसमें वहाँ पे जब लाइन लगती थी तो मेरी नज़र एक दिन खिड़की खुली हुई थी जहाँ पे गुरुजी महाराज बैठते थे। उनका जो सिंहासन गद्दी थी उसके पीछे एक बड़ी-सी विंडो हुआ करती थी। तो वो विंडो यूजुअली उसपे मरून कर्टन्स होते थे। वो खिड़की उस दिन वो कर्टन्स हटे हुए थे, यूजुअली हटे ही रहते थे और ग्लास था उसपे और गुरुजी महाराज अपने जब सिंहासन पे बैठते थे वो एक साइड लीन होके बैठते थे, इफ यू ऑल रिमेंबर। लाइक उनके सिंहासन पे दोनों साइड में आर्म रेस्ट होते थे एंड गुरुजी समटाइम्स यूज्ड टू लीन टुवर्ड्स वन आर्म रेस्ट एंड जब वो ऐसे करते थे तो जो विंडो है उसके पीछे से बाहर से उनका जो डिवाइन हेड है, दिव्य मस्तक उनका, वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह मुझे दिखता था पीछे से। तो एक बार जब मुझे ये दीदार हुए तो उसके बाद तो मैं अक्सर ही ऐसा मौका ढूंढने लगी कि मैं बाहर हूँ और खिड़की से गुरुजी महाराज थोड़ा-सा टिल्ट हो जाएँ ऐसे तो मैं उनके उस दिव्य शिवलिंग जैसे मस्तक का दीदार कर सकूँ। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि जो एक आज साढ़े गुरु आवणा जी है सुखिबरार आंटी का ये जो भजन है, तो इसमें एक लाइन है कि गुरुजी के मस्तक पे चंद का पड़े चमकारा। So it was totally relatable and very true to these lines. It was just like that. So this was another thing I just wanted to add here. Also, Uncle said that Guruji is like Siddha or Nitya Siddha. Of course he is. He's the one who grants all the siddhis. He's the Lord of all the Ashta Siddhiyan Navnidhiyan, as we all know. तो ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां कौन दे सकता है और कौन पोजेस कर सकता है? जो खुद उनका ओनर हो, जो हमारे गुरुजी महाराज हैं। एंड इन वर्डली टर्म्स इफ वी सी, हमारे भगवत गीता में देयर इज दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ योगी जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। सो द स्थित प्रज्ञ योगी, जिसको कि वो ऐसी स्थिति में है जिसने पूरा एक तरह से कैवल्य प्राप्त कर लिया है बट स्टिल ही इज इन दिस वर्ल्ड, तो उसको ही डजंट बॉदर अबाउट एनीथिंग वर्ल्डली। सुख दुख, गर्मी, बरसात, जाड़ा, गर्मी, सर्दी, एनीथिंग, जस्ट एनी फिजिकल स्टेट डजंट बॉदर हिम एट ऑल। सो दैट स्थित प्रज्ञ योगी वो भी गुरुजी के लिए मुझे बहुत एक सटीक लगता था उस टाइम पे और अभी भी। Then we come to this part of the oozing radiance from Guruji, that inner energy Uncle talked about. So that also is definitely the bodhisattvas, the जो भी उस टाइम पे तो सी Guruji never preached, and I remember when Guruji took samadhi, रघु राय अंकल का जब पहला कैलेंडर आया था जो हम सबको मिला था, तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव रिसीव्ड, बट उसका जो फर्स्ट पेज था उसकी फर्स्ट लाइन क्या थी? गुरुजी एन एनिग्मा, अ मिस्ट्री। सो दैट मिस्ट्री वाज ऑलवेज देयर सराउंडिंग गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा चाहा, गुरुजी डिजाइन्ड इट लाइक दैट कि कोई भी उनको पूरा नहीं जान पाए। तो इसलिए उस समय की स्थिति के हिसाब से गुरुजी हमें ऐसे ही अपने को, महसूस कराते थे। तो
उसमें भी जो ये कुंडलिनी शक्ति है, सर्पेंट एनर्जी, जो अंकल ने मणिपुर चक्र के बारे में लिखा है, सबको पता है कि हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जो चक्र हैं, तो गुरुजी के तो 10 द्वार, सारे चक्र, ब्रह्मरंध्र, सब कुछ खुला हुआ था। लाइक वो तो महादेव है, तो उन्होंने अगर ये फिजिकल बॉडी ली थी तो भी तो इस फिजिकल बॉडी में भी तो उनके सारे द्वार खुले थे और उनके सारे चक्र खुले थे। तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक सारे चक्र गुरुजी के खुले थे, इसलिए ये डिवाइन दर्शन होते थे और ये सुगंध आती थी। सो very beautifully uncle ने very precisely actually, because see, कम शब्दों में अपनी बात कहना, as गुरुजी also used to say, short with सुनाई। तो short with सुनाना is a big task, क्योंकि when you are asked to be precise, then you have to work harder. It's like, sorry, I'm writing so much because I didn't have time. So just like that, अंकल ने इतने कम शब्दों में, इतने प्रिसाइज शब्दों में इतना कुछ लिख दिया है अपने इस बुक में, जिसको अगर जितनी बार भी पढ़ेंगे, आई एम श्योर जस्ट लाइक शब्द बाणी will derive a different meaning, a different understanding of every sentence. जैसे कि शिवपुराण में भी लिखा है कि मन सहित वाणी जहां जाकर और जिसे ना पाकर लौट आती है, वो मैं हूं। तो गुरुजी को अपनी लिमिटेड ह्यूमन विजडम एंड इंटेलेक्ट एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस से we can never understand him, never. All we can do is just try to even for this we have to pray to Guruji कि गुरुजी ही हमें थोड़ा बहुत भी जो समझ में आना है वो हमें समझा दें, एंड दैट्स ऑल। इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक वी इवन नीड टू एनालाइज और रैशनलाइज और even try to understand Guruji, because trust me, there's no point. Yeah, we cannot. Now uncle has given very beautiful examples of the Mumbaikar, and of course he talked about DJ uncle, so we all know, and to our amusement DJ uncle बैठते थे एकदम किचन के साइड में, मतलब किचन नहीं, किचन के सामने गुरुजी का जो रूम था उससे बाहर निकलते ही एक बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम रखा था टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और वहां पे डीजे अंकल बैठते थे। एंड अक्रॉस द हॉल, जो संगत हॉल था एम्पायर स्टेट का, इतना बड़ा हॉल, उसके एकदम एंड पे जाके गुरुजी महाराज की गद्दी रहती थी। अब गुरुजी महाराज बिना कुछ कहे वहां से टेलीपैथिकली डीजे अंकल को न जाने कैसे टेली कम्युनिकेशन करते थे कि जो शब्द महाराज चाहते थे वही शब्द डीजे अंकल चलाते थे। समटाइम्स इवन टू आवर सरप्राइज शब्द बीच में चेंज भी हो जाते थे, और समटाइम्स आपके मन में कोई है शब्द, आपने बहुत दिन से सुना नहीं है और आप चाहते हैं कि गुरुजी ये वाला शब्द चल जाए, और वही चलेगा। तो हाउ गुरुजी इज नॉट ओनली कंट्रोलिंग, he is designing the environment, controlling the environment, and manipulating everything there. सब कुछ, सबके दिमाग से लेकर physical environment तक, everything. So this was Guruji's telepathy and his telepathic communication with DJ uncle, which was very, very cute. Now the fragrances uncle talks about, so of course we all know about Guruji's very जिसको बोलते हैं ना मदहोश करने वाली खुशबू। It was not that very overpowering kind of some strong scent or perfume. No. The first I experienced, first thing about the fragrance, जब हम कार पार्क करके एम्पायर स्टेट से we used to walk towards दरबार, और sometimes even जैसे ही आपने गेट एंटर किया, वो जो खुशबू के झोंके आते थे, I used to feel like I'm engulfed in that cocoon of that fragrance, that warmth and
फ्रेग्रेंस का मिक्सचर, वो गुरुजी का एक अपना बहुत ही सिग्नेचर साइन था। और उस खुशबू को बस फॉलो करते करते एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। वो सीढ़ियां चढ़ के, जब वो 3 सीढ़ियां नीचे उतर के नीचे के हॉल में जब जैसे ही टर्न करें उधर से, तो महाराज जब बैठे दिखते थे और उनके चरणों में जाके जब मत्था रख दें, तो समझ में आ जाता था कि where was the origin, where was the source of this fragrance. तो वो फ्रेग्रेंस ऐसी होती थी कि like you have somebody has broken hundreds of bottles of rose perfume in a room, and still you are not overwhelmed by that. It's not that strong and overpowering. It's so soothing to your soul. So that was my experience. And of course, जब गुरुजी को चरणों पे हाथ लगाना, तो वो हाथों से फ्रेग्रेंस आना, कई दिनों तक जाना नहीं, वो सब तो ऐसे अनुभव हैं जो जिंदगी भर कभी भुला ही नहीं सकते. So that, of course, the abundance of fragrances, as Uncle very rightly said. And Guruji की जो signature fragrance होती थी, if I can compare it with anything, it is pretty much like वो जो देसी गुलाब होते हैं. Like in US we don't get those, but yeah, trust me, sometimes I won't say all the time, yeah, every satsang में, but sometimes जब गुरुजी की मर्जी हो, तो वो इंडिया वाले देसी गुलाबों की खुशबू यहाँ तक भी आती है. That whiff of fragrance, definitely. And especially I remember when Guruji took Mahasamadhi, after his Mahasamadhi, the first sign he gave to me was through fragrance. And just after 4 days of his Mahasamadhi, I felt the fragrance and we went to Bade Mandir. So yeah, he definitely communicates through his fragrance too. So yeah, so this is very beautifully written about Guruji's fragrance and about so many beautiful divine attributes of Guruji Maharaj. So I think, yeah, one more thing about the Sachkhand Prasad. So now the Sachkhand Prasad used to be something very sacred, of course, because it was from Sachkhand. Only Guruji had the access there. Only he could get. But I have a very small incident, not small again, but it was Diwali. And I was sitting in the Sangat Hall, Empire State was full. It was Diwali 2005. And I just like that, I looked at Guruji and the parat, which was kept next to him, जिसमें कि लड्डू एंड बर्फी यूजुअली रहते थे, जो गुरुजी अपने हाथ से उठा के संगत को देते थे. And believe me, that parat was empty that time, almost near empty, because गुरुजी उस दिन काफी संगत थी, तो सबको बिल्कुल गुरुजी का तो एकदम खुला हाथ था, लेफ्ट एंड राइट देते जा रहे थे. और मेरे मन में हल्का सा ये एक बस थॉट आया भर कि जब तक मैं बाहर हाथ धो के आऊंगी, तब तक तो गुरुजी सारा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे. And that very time, Guruji called me with his signature hand movement like that. And trust me, I was sitting across the hall, partaking langar near the pillar, and I just ran towards Guruji. And oh my God. So, and while I was going to Guruji, I saw Guruji was doing some mudra, like हाथ से वो ऐसे ऐसे करके कुछ balls sort of बना रहे हैं उस परात में, but I could not see what was there. Because when I saw first, it was empty, near empty. And to my utter disbelief, of course, to my surprise, when I went, Guruji के हाथ में इतना बड़ा सा लड्डू and बर्फी का एक mixed ball sort of था, which he gave to me just like that. और ना सिर्फ मेरे दोनों हाथ भर गए, my soul, my heart, everything was overflowing with Guruji's divine love. तो बाहर आके हम दोनों हाथों से खाते थे. There was no other way. ऐसे दोनों हाथ मुंह पे करके खाना होता था, क्योंकि आपके हाथ तो पूरे भरे होते थे. तो this was again a very beautiful moment. And uncle ने जब उसके बारे में लिखा, so of course this reminded me of that beautiful Diwali जब गुरुजी ने ऐसे प्रसाद दिया. So the last
he is there, he is not there, of course. गुरुजी वहां बैठे होते थे और न जाने कितनी और संगतों का कल्याण कर रहे होते थे कहाँ पे जाके. नॉट ओनली दिस लोग, so many अलग अलग लोगों में जाके different realms. Sometimes I even used to feel कि this is a totally different portal Guruji opens for us. This is a different realm. क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ होता है, this defies the physical laws, right? Causality, like cause and effect, and everything is defied here. No laws of physical world apply here. So that is why I always used to feel it's a different realm. And Uncle rightly has said that. And that makes me, I would like to question Rahul Uncle about this a little bit, if he can throw some light on this line, which is very deep actually. Because this line is, it's like it says so much without talking too much. This says, he raised the spiritual level of humanity under a new paradigm of living. So, what exactly he means by that? Because this is something we all aspire. And this is something I think Guruji also descended on this mortal lok to bless us with this new paradigm of living. Because otherwise तो हम सभी रहते ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, जो पशु भी करते हैं. तो उसके बाद क्या जरूरत क्या हुई, व्हाट वाज द नीड कि गुरुजी महाराज को आना पड़ा हम सबको स्पिरिचुअली एलिवेट करने के लिए एज सोल्स, और हमें हमारा जो रियल डेस्टिनेशन है उसको दिखाने के लिए. सो दिस लाइन इज वेरी वेरी एक्चुअली deep, and at the same time I would like Rahul Uncle, please, if you can talk a little bit more about it, that whatever came into your mind with Guruji's prerna, his inspiration, that you wrote this line, which is very profound. So over to you, Rahul Uncle. Thank you so much for writing such a divine granth, and thank you, everyone. Thank you so very much. Jai Guruji. Jai Guruji. Vasan uncle, am I audible? Jai Guruji, uncle, you are audible. Yeah. Yes. So it's a beautiful satsang today. I am quite overwhelmed by the way Gopal uncle and Archana aunty have described about Guruji. The book is just a medium. It is through them Guruji is telling about himself to the world, to Sangat. Today we started the part 2 of the book. Part 1 was the life journey of the Mahapurush. It was a very brief life history of Guruji with some kind of little bit of you can say incidents of his life, which we can call satsangs. But that was a very, very limited kind of description. But that was required if some non-sangat, somebody who does not know about Guruji, wants to know about Guruji, before going to about his spirituality, there was some need for giving a brief account of his life. This was the suggestion by the publisher when I introduced only around 10-12 pages about his life in one of the chapters. The publisher suggested that his editorial team rather, they suggested if we can expand this and we can bring to as the first part of the book, that will be better. And I agreed, and I realized it was necessary.
So after completion of the first part, today we have started with the second part. This second part will go for the entire rest of the book rather. Though I have made several parts in the contents, this is the real spiritual part of Guruji. And what a beautiful way today two of our esteemed old Sangat, Gopal uncle and Archana aunty have described. I want to give a little bit of a background. Archana auntie's question I will answer some other day because that is a very, very, you can say it is a $1 million question and it requires a lot of time and effort to answer it. So opportunity comes, I will talk about it. But Sure. let me give a little bit of a background for the second part. Suppose आप लोगों को आप गुरुजी के फॉलोअर है, जो नॉन फॉलोअर है आपके दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, प्रोफेशनल कॉलिग्स होंगे, पीयर्स होंगे, वो आपको पूछेंगे कि आप गुरुजी में क्या देखा कि आप लोग उनको भगवान के अवतार मानते हैं, महाशिव मानते हैं। Mhm. तो आप तो बोलोगे यही सारे सत्संग करोगे कि गुरुजी वाज लाइक दिस वो सुपरनैचुरल पावर था, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। देन ये लोग जो लोग आजकल वेस्टर्न चिंताधारा में एजुकेटेड है, दैट इज ए काइंड ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो बोलेंगे भाई यू आर हैविंग ए ब्लाइंड बिलीफ, Hmm. you are blind followers of a guru. We don't accept it. It is beyond rationality. Look, how you will take Guruji beyond the confines of the followers. That is the objective of this book. Not necessarily only for the Sangha. For the larger world, let us say, yes, he was incarnate of Lord Shiva. Mhm. And why? Before going to that, chapter wise, we have given different characteristics or different spiritual tenets of Guruji. Try to relate it to the great spiritual tradition of the country, of this civilization, this Indian civilization, which is around 5,000 years old. Mhm. But now, let us talk about a little bit of the rationality. I talked in the second or third session when first Gunjan Sharma uncle and Akash Shetty uncle subsequently, they asked me, being a rational person, how you believe in a guru? Again, that question will come to you quite often. And today I'll give a little background there from the manifestation of divinity of Guruji will be important. Rationality, what we call about rationality? You act rationally, you think rationally, you believe rationally. There are 3 dimensions of rationality. Mhm. And the scientific method of rationality is based on reason. And the reason is based on evidence. और एविडेंस किसकी है? ये मटेरियल वर्ल्ड की है। हार्ड मटेरियल वर्ल्ड की रीजन और एविडेंस है, उस बेसिस पे ही ये लोग बिलीव करते हैं। अगर आप प्रूव कर पाओगे हम बिलीव करेंगे, नहीं तो हम बिलीव नहीं करेंगे। बट Mhm. spiritual world is different. Right. It is based on logic. It has its own rationality. The rationality is different from scientific rationality. But that is not without rationality. If some person say you are irrational, I will tell, take recourse to the dialogue.
between Rabindranath Tagore and Einstein in Berlin in 1934. I will just give a part of it. Einstein said, there are two different conceptions about the nature of a universe. One, the world as a unity dependent on humanity. The world as a unity dependent on humanity, what we perceive, what we do. The world as a reality independent of a human factor. Don't put your emotions, don't put your feelings, don't put your realization to the world. Take the material world as it is, go through the scientific methodology and prove it. That is the truth. So these are the two ways of looking at it. And Tagore said, when our universe is in harmony with the eternal man is a supreme soul, the God, we know it is truth. We feel it as beauty. We feel, we don't prove it by material methodology. Then Einstein said, there is purely, this is purely human conception of the universe. That what you are conceiving the universe, then Tagore said, there can be no other conception. This world is a human world. The scientific view of it is also that of a scientific man. What you are saying a scientific methodology, you are a man, you are adopting a procedure, a methodology. There is some standard of reason and enjoyment which gives the truth, the standard of eternal man, whose experiences are through our experiences. That means whatever manifestation of God is through our experiences. We experience those manifests and we describe that. So that is the background, that how beautifully Tagore told Einstein. Both were Nobel laureates. One is physics and another is in literature, but their minds met at last. So coming back to divinity, when we say divine, what is divine? How will you define it? Divine refers not only to the nature of a God, but also to the qualities, actions, and presence of God in the world. All of this is divinity. So, what are the qualities, actions, presence, and nature of God? That's very difficult to say. It is only through the divine vision, by grace of God, that sages, rishis, have realized the essence of a supreme soul, that is God. By grace of God, they have realized. And that is what Tagore was saying. We were realizing the truth and we are saying, so experiencing the truth. In Kena Upanishad, there is a typical sloka, sloka number 3. It says, na tatra chakyu gachati, na back chati, no mano, no vidmo, no visionimo. The English translation is like this. The eyes does not go there. No speech, nor mind. We do not know that. We do not know how to instruct one about it. It is distinct from the known and above the unknown. We have heard it so stated by perceptors who taught us that. These perceptors are the earliest sages, and the sages and the rishis and the gurus, they come from time to time taking avatar. When the concept is such complex and difficult to explain, it is the realized souls who try to describe what they have realized themselves, apart from providing a guiding path to the
to attain such realization or mukti, because such gurus or sages have realized themselves, our ancestors equate them with God. Such realized souls take avatar in the form of a true or a Puran guru. We have this spiritual tradition since last 5,000 years. But your friends, if you tell this kind of thing, they say, oh, you have not answered my query. Then we have to go back to that. The spiritual system is a logical belief system. Correct. Rationality and scientific methods cannot fathom God because of their limitations. The sages and realized souls have crossed these limitations and realized God. We have heard from them. That's why our Vedas are called Shruti. Such souls have realized or seen internally the characteristics or manifestation of a God. That is why from those kind of realized souls, we know what is the qualities, nature, characteristics of a godly persons or God himself. And from them, these realized souls that God is omnipotent, omniscient, and omnipresent. That is the nature of a God. From this perspective, God is eternal and he has no seconds. It is only the avatars which exhibit some of his characteristics that humanity recognizes them as such. Now it comes to the context of a Guruji. From this perspective, God is eternal and he has no second. It is only the avatars which exhibit some of his characteristics that humanity recognizes them as such. So this is a logical flow of why we now recognize the characteristics which are exhibited by Guruji. That's why we say he is Mahashiva incarnate. And how they possess such godlike characteristics, as it has been told by in the book as well as elaborated by Archana Aunty, that there are two ways inherent with birth, because they are God incarnate. From birth, they exhibit such kind of qualities, or people acquire, yogis acquire. When yogis become Mahayogi, they acquire a stage that is called Kaivalya Samadhi, where we talk about that in Manipur Chakra, the quotation I have given in the book of Patanjali Yoga Sutra Vibhudipada Shloka, that they acquire such a kind of characteristics. Mhm. At this stage, when they attain that stage of a Kaivalya Samadhi, they themselves, they say, Tattvamasi, the Brahman is me, Aham Brahmasmi, I am Brahman. Then Aham Atma Brahman, this Atma is Brahman. Purusha Aham Asmi, that means I am the Purusha. Purusha is equated with God, eternal God. So at that stage, when they attain the Kaivalya Samadhi, there is no difference between the person who visualizes or realizes God and what he sees or himself, that they are equated. So these are two ways you get the godlike characteristics, and that is the state Adi Shankaracharya said, that is the Shivoham state. And he beautifully says, neither I am the mind, nor the intelligence or ego, neither I am the organs of hearing, nor that of tasting or smelling or seeing, neither I am the sky, nor the earth, neither the fire, nor the air.
I am the ever pure blissful consciousness. I am the eternal Shiva. I am the eternal Shiva. So if you have found the manifestation of these characteristics, that is the of a Mahayogi, when he himself is eternal Shiva. I am the eternal Shiva, they themselves say to themselves. And at that stage, there are three divine characteristics which are exhibited in the Shivam state. One is the divine aura, which we have described in this book and beautifully told by the narrators today. Then the divine energy field, which is spread physically and spiritually, and they are capable of imbibing such energy with the disciples. There is a concept called Shaktipat. You can go through that. They also imbibe such energy, spiritual energy, in the disciples and the body pragnanas. These are the three characteristics we talked about today, but the rest of the book talks about significant other characteristics, the supernatural powers, the love, universal love, and affection, and many other, like Archana Aunty was talking about Sthita Prajna. A lot of characteristics of Sthita Prajna will come to that subsequently. So today I gave this little background about today's chapter as well as for the rest of the chapters of the book, gave a context and gave also a tentative answer, a logical kind of explanation. If somebody asks why you accept Guruji as a avatar of Lord Shiva, it is not a blind belief. We have reason to believe it, and this reason is a spiritual reason. And we have experienced, we have realized it, as sages have realized it through ages. We have, with our limited and Guru's blessings, we have also observed, we have seen it, and that's why we accept him as avatar of Mahashiva. So this is what I wanted to give a little bit background for the today's chapter as well as the rest of the chapters. At this stage, I think I'll stop. Jai Guruji. Yeah, Guruji. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Shivoham, Shivoham. Beautiful. Beautifully and very well said, Uncle. Thank you. I would like to thank each one. And you know, this session is such a profound session. And last thing, what Raul Uncle, you have explained, because we are being disciples of Guruji Maharaj and being in his sharan for more than few decades now. This question we have been asked many a times. Perhaps we have not been able to put across in that emphatic manner the way you explained. Thank you so very much. This goes for the benefit of one and all, for the entire Sangat. And I'm sure when this session would be heard and viewed by those on the YouTube channel, they would be benefited out of it. Over to you, Vasan Uncle, for you to take ijazat, and then we all. मैं गोपाल सेठी अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 2 शब्द बोलें. अंकल, गुरुजी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन बात वही है कि ईश्वर जो है ना, वो शब्दों से ज्यादा हमारे एहसास में बसता है. वेरी वेल सर. आस्था ही है ये, जो हम पत्थर में भगवान बना देते हैं, ढूंढ लेते हैं और उनको मानने लगते हैं. आस्था नहीं है मन में. शिवपुराण में भी बार बार यही बात समझाई गई है कि जो इंसान बिना भक्ति के जितना मर्जी आडंबर कर ले, उसको कुछ हासिल नहीं होता. लेकिन कोई भी ऐसा जीव जो केवल भक्ति के आश्रय मुझे ढूंढना चाहता है, मैं उसको तुरंत. तो मन में ये भावना तो होनी चाहिए सुरेश अंकल कि जिसको मैं मानता हूं. हमारी तो संस्कृति ऐसी, हमारे तो संस्कार ऐसे हैं. हम माता पिता में भगवान, माता पिता को भगवान स्वरूप मानते, क्योंकि पहले गुरु तो वही हैं. तो वो उस गुरु से लेकर के इस गुरु तक की जर्नी जो है, वो अपने आप में इतनी सुंदर,
और अपने आप में इतनी एक्सप्लेनेटरी है। और जैसा अभी राहुल अंकल ने समझाया कि ये लॉजिक से नहीं समझ सकते हम भगवान, हम तो प्रेम से समझ सकते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। Yeah. तो बस, और प्रेम की भावना भगवान ने सबके अंदर दी है, हम सबके। बस इतना ही है अंकल, आज बहुत सुंदर सेशन रहा। आई Very nice. डेफिनेटली एक्नॉलेज दैट। जी वंडरफुल। अंकल, आज को जो सेशन था, आज के सेशन से मेरे ख्याल से बहुत ही डीप सेशन आज से शुरू हुए हैं, Yes. और अभी आने वाले वीक्स में महाराज के बारे में बहुत गहन बातें, गूढ़ बातें अभी मालूम पड़ने वाली हैं। Hmm. तो संगत जी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसके पास ये बुक ना हो वो ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक अभी पीडीएफ या किसी उसमें नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म पे। दिस मे बी परचेज फ्रॉम अमेजोन। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से मैं गोपाल सेठी अंकल आपका, अर्चना श्रीवास्तव आंटी आपका, अचरपाल अंकल का, रोजी सद्दू आंटी का, राहुल अंकल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद समय देने के लिए और गुरु महाराज जी की उस्तत करने के लिए। अब हम सब, और साथ में साथ संगत जी का भी, जिन्होंने बहुत पेशेंटली बहुत देर तक वो सुनते रहे, सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का है, संगत जी का है। इसी के साथ ही गुरु महाराज जी से अब हम सब आज्ञा लेंगे। Yeah. Jai Guruji. Thank you so much for